afternoon, dear students. We are discussing at my YouTube channel HR Totally Tutorial about the reproductive health. What term is there? Reproductive health. In case of reproductive health, first of all, a particular term will be there. In case of that term, first, that is the definition of reproductive health. Second, the problems which is related to the reproductive health. Third, strategies for the reproductive health. Fourth, population explosion and the region of population explosion. And later on, how we can control the population explosion or the number of contraceptive methods. In case of contraceptive methods means what? To prevent the fusion of male and female gametes. Avoid the fusion of male and female gametes. So now this time, in case of that contraceptive methods, what is the ideal methods of contraceptive methods? There is a totally, in your textbook, 4 methods are there. On the basis of classification or the study purpose, we can just classify into the 6 parts. First, natural methods. In case of natural methods, there is the 3 methods are there. And second is the barrier or the physical methods. There is again 2 to 3 methods are there. In case of barrier and physical methods, there is the hormone released, copper released, or the another part, prostate release part will be there. And third, oral contraceptive methods or injectable methods. IUDs, that is only for female, and most popular that is the physical barrier methods is there, and IUDs for only for female, and lastly surgical as well as permanent methods. Later on, today we have discussed about the particular part of that thing, that is the MTP. MTP, medical termination of pregnancy. MTP means medical termination of pregnancy. So what that thing? Sometimes what happen? The pregnancy is not fruitful for the female, not fruitful for developing fetus, or sometimes the pregnancy is not accepted by the society, or the unwanted pregnancy is there. At that case, the pregnancy can be terminated by the advice of doctors. That is the MTP. For the way of MTP, the government of India has just one act is there. According to that act, the pregnancy, which is the hazards for the female or the mother, pregnancy is not complete development of the fetus, or the society is not accepted due to the rape, or number of other reasons are there. At that case, with the help of doctors, that type of pregnancy can be terminated. But termination of pregnancy before 3 months is fruitful. After then, the tissues can be completely developed, and that is the harmful for the female or the mother. Next case, what will be happen? Here is the one thing is there. Nowadays that MTP is misused. That is not used for the unwanted pregnancy. There is used for the test of sex determination, male and female, and after then, if the female fetus is there, then that pregnancy can be terminated. That is the female baby
फेटिसाइड्स बोलते हैं. फेटिसाइड्स मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. फीमेल प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड. So there is the misuse of the MTP. So what will be happen? One question will be there. What is MTP? According to a biological students, according to your view, the MTP will be there according to the government act or not? Then your answer, the act is correct. But misuse of MTP is wrong. For that part, how we can prevent the misuse of MTP on the basis of sex identification? So, what that thing is there? In case of MTP, the first of all, MTP means medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. Termination of pregnancy before the completion of full term of internally or the voluntary is called as the medical termination of pregnancy, MTP, or induced abortion. MTP has significant role in decreasing population through it is not the meant for the death purpose. Population की रेट को डिक्रीज करने के लिए MTP नहीं बना है. MTP अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए ही बना है. The government of India legalized MTP in 1971 with some strict provisions to prevent the misuse of MTP. 1971, Government of India have legalized that act of the MTP. Next question, why MTP? First, to prevent the unwanted pregnancy. To prevent the unwanted pregnancy. Second, in cases where the continuation of pregnancy is harmful, I have already discussed with you, if unwanted pregnancy that is not accepted by the society or that health is not support for the female or the developing fetus is not completely organ is developed or the genetic disorder or genetic disease is there, or sometimes due to the rape or other reason will be there. Number of reasons for the unwanted pregnancy or the pregnancy continuation harmful for the fetal as well as mother also. Then दोनों के लिए हो सकता है. At that case we can terminate the pregnancy, that is the MTP. MTP are set in first trimester. पहले 3 महीने तक ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना फ्रूटफुल होता है. Later on, the developmental of parts of organ and the tissues or the placenta that is not allowed that part or that may be more riskier part. However, MTP, medical termination of pregnancy during the second trimester are riskier. A dangerous trend to that MTP. मैंने आपसे पहले भी बोला था, आजकल हमारे पास में MTP का एक मिसयूज स्टार्ट हो चुका है. That part. First, MTP is performed by the unqualified doctors. Unqualified doctors or without experience of doctors. And that is the fatal for the mother, especially mother के लिए बहुत harmful हो सकता है. Also use of amniostatus. ध्यान दें, ये क्वेश्चन भी आ रखा है. Amniostatus means what? डेवलपिंग फीटस के सेक्स को आइडेंटिफाई करके और जो फीटस है उसके सराउंडिंग जो एमनियन एक मेम्ब्रेन होती है, एमनियन कोरियन, उस एमनियन मेम्ब्रेन से फ्लूइड को लेकर के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि दैट इज द फीटस इज मेल और फीमेल. If that female is there, then on the basis of amniostatus test, the pregnancy can be terminated. So that is the amniostatus. Amniostatus is again the feticide process. So the methods to prenatal sex determination may lead to the female feticides, as the performance for the male child is very high. So that is the first question. What is the MTP? Why MTP is used, and if it is
useful or not, or how we can misuse prevent process will be there. So that is related, one question of related with MTP. What is MTP? Usage of MTP. Now this time second part, that is the STD, और STD को अदर पार्ट्स में हम VD के नाम से भी जानते हैं. STD, sexually transmitted disease. Those disease which can be transferred from one person to another person, that is only by the sexual relationship. STD, sexually transmitted disease. Or there is also VD. VD means vaginal disease. Male and female physical sexual relationship will be there, and due to that region, या वर्नियल डिजीज के नाम से भी जानते हैं. VD, STD दोनों कॉमन वर्ड है, ध्यान दें. Disease or the infection of the reproductive tract which are the transmitted through the sexual activities and intercourse are the collectively known as the sexually transmitted disease as well as STD, or that is also known as the VD, venereal disease. Or the reproductive tract infection, STD बोल दीजिए, VD बोल दीजिए, STD, VD or the RTI. RTI not a act, that is the reproductive tract infection. यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके ऑर्गन और उसके पाथ में कोई इन्फेक्शन या डिजीज हो जाती है, that is the RTI, reproductive tract infections. For example, gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydia, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, HIV leads to the AIDS are some of the common STD. ये सारे के सारे STD है. गोनोरिया बैक्टीरिया से डिजीज होती है, सिफिलिस, जेनेटियल herpes, क्लेमाइडियस, जेनेटियल वार्ट्स, ट्राइकोमोनासिस, hepatitis, HIV are the STD, VD as well as RTI. HIV infection is most dangerous. Hepatitis B and HIV can also be transmitted by the sharing of injection or the surgical implantation of with infected person to the another person. Not only surgical instruments, that may be transfusion of infected blood, transmission from infected mother to the fetus also. यानी STD और HIV or hepatitis B, both are the STD, but that are not only transmitted by the sexual relationship, they may be transmitted by the surgical or the injection or the transfusion of blood or the mother to womb or the mother to fetus. Except for the hepatitis B, genital herpes and HIV infectious, other are STD curable if detected early. यानी सिंपल सी थिंग्स है, हमारे पास में मैक्सिमम STD है, वो क्योरेबल है, वो ट्रीटेबल है, उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट अर्ली स्टेज में. बट हेपेटाइटिस बी, जेनेटियल herpes and HIV is never treatable or never curable. So that is the STD, VD as well as RTI. इससे पहले था MTP और उसके बाद है STD. What is STD? Different examples of STDs and how the STDs can be transmitted from one person to another person. And next is the another term that is the related with some common symptoms of STD. इन्हीं में आपके पास में कुछ symptoms आपको चेक करने होंगे STD के. First of all, some common symptoms for STD include itching of genital part. Genital part में itching होगी, fluid discharge होगा, slightly pain होगा, swelling होगी genital part के साथ. और they are the common symptoms: itching, fluid discharge, slightly pain and swelling. Individual may remain the asymptomatic for a long time. अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है
उसके लिए लॉन्ग टाइम में ए सिम्टम्स पार्ट भी रह सकता है. दिस कपल्ड विद दिस स्टिग्मा associated with STDs are the major reasons many STDs are remain to undetectable. Number of STD till today are not detected or not identified. This could lead to the completion later, which include the pelvic inflammatory disease (PID), जो pelvic region है genital organ के middle part का, that part is also inflammatory, swelling आ जाता है उसके साथ में. That's why sometimes the STD may be in the form of PID, pelvic inflammatory disease (PID). Abortion, PID का फॉर्म हो सकता है, abortion भी हो सकता है, still बर्थ रह सकता है, एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी भी आ सकती है इसकी वजह से, एसटीडी की वजह से, और इवन द कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑल्सो, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. द एसटीडीज आर ए मेजर थ्रेट to the attending healthy society. Hence, the prevention along with early detection or the cure of these diseases are given to prime importance under the reproductive health care. I mean, whatever type of STD is there, definitely we have to go through the particular curable or the treatment or detection or the diagnosis and later on treatment also. Because after a long time, it maybe leads to the another type of disease. For example, pelvic inflammatory disease, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility, or maybe the cancer in reproductive tract also. Step to prevent the STD. How we can prevent the STDs? So, here is the general part will be there. First, avoid sex with unknown person or multiple partners. Whatever type of unknown person is there, avoid sex with unknown person or the multiple partners. Number 2, always use during the intercourse or coitus, use the barrier methods for the avoiding of STD. Number 3, if in doubt, go to the qualified doctor for early detection and the treatment for the STDs. So, definitely by the prevention, we can control or we can avoid the STDs. Next is, that part is the infertility. Here is that part is important part. What is the infertility? A couple without any using of barrier methods for the long time, if the pregnancy is not there, it means that is the infertility. Whatever type of reason is there, if they are not use any prevention, any precaution, without any barrier, 4 to 5 years or 6 years continuously they have the relationship, but pregnancy is not there, it means that is the infertility. Whatever type of reason is there, not only in the infertility means the gametes are not produced, gametes are produced, sometimes gametes are not fused, sometimes fused, but the pregnancy is not there. Sometimes pregnancy is there, but continuity is not there. So the number of regions that may be structural, physiological, or the other type of barriers are there. Due to that barriers, the pregnancy is not continuous. Infertility is the inability to produce the children in spite of unprotected sexual cohabitation. Without any barrier, continuously, physical relation is there, but they have no relation, they have no pregnancy. Reasons could be physical region हो सकता है, congenital region हो सकता है, कोई disease हो सकती है, drugs का use हो सकता है, immunological problem हो सकती है, psychological problem हो सकती है. Number of reasons will be there: physical, congenital, disease, drugs, immunological, or the psychological.
Often a female is blamed for being the childless, but the fault could more often than not lies with the male as well as female. Maybe both are the responsible, not only female is responsible. Specialized healthcare units like infertility clinics could help in corrective treatment of some of these disorders. Specialized healthcare units like infertility clinics could help in corrective treatment of some of these disorders. In case of corrective treatment are not possible, couples could be helped with assisted reproductive technology ART. अगर प्रॉपर हेल्थ केयर ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी नहीं होती है तो nowadays number of assisted reproductive technology is there, ART. So sometimes the question will be there, different the technical word is there and full form of technical word and where these methods is used. So first term, that is the ART, assisted reproductive technology. Next, number one, that method is the in vitro fertilization, IVF. In vitro fertilization, IVF. This involves the fertilization of gametes outside of female body. Conditions should be provided such as a female inside body. Really, there is a mimic body condition. Mimic means that is just all the conditions are similar with female inside of body. Same conditions are availability or the providing in the laboratory, and the fertilized zygote is then induced to devise to form the embryo, and this embryo is then transferred to the uterus of the female body. अगर वो मदर खुद जिसका ओवम लिया वो अगर फर्टिलाइज आपके पास में एम्ब्रियो को होल्ड कर सकती है तो उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, और नहीं कर सकती तो सरोगेट मदर में ट्रांसफर किया जाएगा. But IVF means the fusion of male and female gamete outside of female body, but there is a mimic body condition is used. So first IVF, सबसे पहला टर्म था, ध्यान दें, फर्स्ट टर्म आपके पास में एक तो था आपके पास में RTI, एक है आपके पास में ART. RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ART असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और नेक्स्ट टर्म आपके पास में आ जाएगा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा ZIFT गिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, उसके बाद में IUT इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, लेटर ऑन आएगा GIFT, फर्स्ट था जिप और ये है गिफ्ट gamete intrafallopian transfer, and next is the ICSI, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है. And next there is a part of AI method, artificial insemination, and later on IUI. So these are the technological terms which is related to the infertility. फर्स्ट ART असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये सारे मेथड्स उसी के हैं. IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल गैमेट्स को आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी में फर्टिलाइज किया जाएगा लेबोरेटरी में. उसके बाद में जैसे ही जाइगोट बनेगा वो जाइगोट को लेबोरेटरी से लेकर के सीधा फैलोपियन ट्यूब में ओविडक्ट में ट्रांसफर कर देना आपके पास में जिप कहलाता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. द जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 सेल से बनने से पहले उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना जिप कहलाएगा. और नेक्स्ट इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, यानी जैसे ही आपके पास में
अगर 8 to 16 सेल्स और समटाइम्स 16 to 32 सेल स्टेज में पहुंच जाता है, उस आईवीएफ मेथड से बना हुआ जो एम्ब्रियो है, जिसको अपन जनरली आपके ब्लास्टुला कहते हैं, उस ब्लास्टुला को वहां से हटा करके सीधा यूट्रस में इम्प्लांट करवाया जाता है। गर्भाशय में सीधा रोपा जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी। नेक्स्ट, आईयूटी के बाद में हमारे पास में अगला टर्म आता है, वो आता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिप। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी ओनली और ओनली हम लोग वहाँ पर जाइगोट न बना करके केवल गैमेट को ही ट्रांसफर करते हैं। द ओवम फ्रॉम द डोनर कलेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर फीमेल। ये कब यूज किया जाता है, ध्यान देना। एक फीमेल जिसमें ओवम तो बन रहा है लेकिन फर्टिलिटी नहीं हो रही है, तो जो डोनर है उससे ओवम ले रहे हैं, ओवम लेकर के उस ओवम को ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरी फीमेल के। क्यों? क्योंकि दूसरी फीमेल उस गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। वन बट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन प्रोवाइड द कंडीशंस फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि वो केवल और केवल ओवम लेंगे दूसरे से, डोनर से लेकर के फिर उसी फीमेल में फर्टिलाइज करवाएंगे। दैट इज द गैमेट ट्रांसफर मेथड, यानी गिफ्ट के रूप में लिया है डोनर से। नेक्स्ट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कई बार क्या होता है, स्पर्म बनते हैं लेकिन इनएक्टिव होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन स्पर्म को इंजेक्शन में भर के सीधा ओवम में ही इंटर करवा देते हैं साइटोप्लाज्म में। दैट इज द ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI is a specialized procedure that form an embryo in the laboratory by the directly injecting a sperm into the ovum। ओवम में डायरेक्ट स्पर्म का इंजेक्शन ले देते हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कई बार क्या होता है कि मेल में जो सीमन रिलीज होता है उसकी मोबिलिटी नहीं रहती, या उसकी पर्टिकुलर स्पीड नहीं रहती, या स्पर्म इनएक्टिव होते हैं, या उनका सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो कंप्लीटली एक्साइटेड नहीं हो पाता है, बहुत सारे रीजन रह जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि उस मेल से सीमन को रिलीज किया जाता है और सीमन को लेकर के किसी आर्टिफिशियल डिवाइस में डाल करके फीमेल के वेजाइना में उसको छोड़ दिया जाता है। लिया उसी मेल से जाएगा और उसको वेजाइनल रीजन में छोड़ा जाएगा। देन दैट पार्ट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हमारे पास में एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री, उस पूरी की पूरी एनिमल हस्बेंड्री में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही करवाया जा रहा है। और आजकल डिफेंस में बहुत सारे जवान हैं, वो क्या करते हैं, अपना सीमन होता है वो फ्रोजिंग करवाते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करवाते हैं। अगर फ्यूचर में जब कभी वो चाहे उनकी डेथ भी हो जाए और पहले से वो रिटर्न में दे, तो उन्हीं के सीमन को निकाल करके वापस उसकी फीमेल को, उसकी लाइफ पार्टनर को फर्टाइल करवाया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। IUI दो रीजन है, या तो वेजाइना में छोड़ दो, और वेजाइना में नहीं छोड़ते हो तो आर्टिफिशियली जिसके आपके पास सीमन है उसको यूट्रस में छोड़ दो, तो इसको अपन IUI मेथड कहते हैं, इंसेमिनेटरी ऑफ द फीमेल। ऑल दीज मेथड्स रिक्वायर और सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हैंडलिंग विद प्रोसेज विद हाई प्रिसिशन। दे ऑल्सो नीड टू एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। ये सारे मेथड्स बहुत महंगे मेथड्स हैं। एंड लीगली, और इतना सब कुछ करने के बावजूद ये सारे मेथड्स, इनमें से कोई मेथड अगर उस पर यूज में नहीं आ रहा है, एंड दैट केस द कपल हैव infertility, then they have only one option, that is the last option, that is the adaptation. Only the part of adaptation। इनमें से किसी मेथड में, दोनों पे कोई आपके पास में मेथड एक्शन में नहीं आती है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, that is the adaptation is the another method, good methods for the couple looking for the child. Next, so that is the complete methods. So today we have studied about the generally we have the major three parts only. First, that is the MTP, second, that is the STD, and third, that is the infertility. All these are the methods
and one by one we have already discussed. इसी के साथ में chapter number 4 is closed and we will meet on tomorrow next with the chapter number 5. इसी के साथ में unit number 1 आपकी complete हो जाएगी. Thanks a lot.